Property of transaction. The property of transaction is called as the acid property. Okay, acid property. A for atomicity, C for consistency, I for isolation, D for durability. The transaction property is short form. It is called as the acid property. A for atomicity, C for consistency, I for isolation, D for durability. Then what is the actual meaning of atomicity? This property states that the transaction must be treated as an atomic unit, that is either all of its operation are execute or none. Okay, atomicity कौन define करिवो ना जहाँ भी हमें transaction करूचे suppose insert हेले आउ गोटे पटो अपडेट हबो किबा डिलीट हबो किबा डिलीट हेले आउ गोटे पटो अपडेट हबो किबा आउ गोटे पटो insert हबो जेमते तमे फोटो जेतबे डिलीट करूचो तमरो रिसेंटली एल्बम फाइल रे सेठी insert हो सेठी नुवा रेकर्ड सेठी स्टोर होउची किंतु तुम एल्बम रू डिलीट होउची गोटे पटे डिलीट हेला गोटे पटे insert हेला तापर जाय हम कहूचे ट्रांजैक्शन कंप्लीट. Okay, so the property state that the transaction must be treated as an atomic unit, that is either all of its operation are execute or not. Either सबु statement execute हबो नले कौनसी statement आर execute हबो ना. So there must be no state in the database where the transaction is left or partially committed. Atomicity ensure that there is no partial committed means गोटे record धर मु album रू delete कली सेटा गलानी सेटा recent deleted file को गलानी सेमती हबनी तो total एटा को से count करिवो. The state should be defined either before the execution of the transaction or after the execution or failure of the transaction. तो ये define करिवो state should be defined either before the execution of the transaction before रो से ensure करिवो और after execution रे से ensure करिवो जे मोर डाटा already committed अछि बा टोटली मो डाटा कोनसी प्रकार execution हेनी. जदि हबो तो दुईटा सब जगह ट्रांजैक्शन करिवो जदि ता भीतर कोनसी प्रकार गोटे प्रॉब्लम आसिला कोनसी क्वेरी ऊपर बा इंसर्टिंग कमांड ऊपर तले टोटल नंबर ऑफ फेल्युअर आउट. कंसिस्टेंसी कोन कहिवो द डेटाबेस मस्ट रिमेन इन ए कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर एनी ट्रांजैक्शन. So when you do any kind of transaction like update, delete, मु जहाँ भी करिवि तो सेटा को फॉर्मेट रे रहिबो ना it is a consistent format. That means what? When I view the record, so whatever the result I will get, another person if check that particular record, so same thing it is visible to you. So मते गोटे record आउ जन को गोटे record एमति देखिबोनी. So in any side or any screen, whatever the operation you are performing, so in every screen it is showing you same. So when you move to any banking sector, in the banking sector there is mentioned it is a single window application. Single window means in any desk you are going and do any kind of transaction, it is reflected to all the people. आगुर थिला अकाउंटेंट रो गोटे अलगा थिला डीडी बने पे गोटे काउंटर रहउतला तो समस्त डिफरेंट डिफरेंट काम करथले. एठी कोन होतला ना गोटे लोक पाखरे सब प्रकार रो इन्फॉर्मेशन रहियो तो आको कहा जीवो कोन ना कंसिस्टेंट फॉर्मेट बोली कहा जीवो. If the database was in a consistent state before the execution of a transaction, it must remain consistent after the execution of the transaction as well. So before the record जहाँ मु देखिबी suppose मु insert जत हमरा अकाउंट रे 6000 रुपीस अछि मु ओडिसा रे देखले 6000 रुपीस जत मु कोलकाता जाउची ऑन द मीन टाइम आउ जने के 3000 रुपीस की 4000 रुपीस मोर ऐड कला तो जतले मु सेठी जाई देखिबी so it will be add up माने सेठी भी 10000 देखेबो कोलकाता रे जतले पुनी ओडिसा को वापस आसीबे सेठी भी मते 10000 देखेबो. एठी नै कि जतले मु स्टेट को वेरी करी जाउची टेम्परेचर होया जे टेम्परेचर जेमति चेंजेस होउची सेमति मनी भी चेंजेस होबो तो मनीटा सब बळे कंसिस्टेंट फॉर्मेट रे रहउ. तो डेटाबेस रे हमें जे कोनोसी
ऑपरेशन करू एनी लोकेशन ने करू एनी स्क्रीन ने करू एनी डिवाइस ने करू ये गोटे प्रकार कंसिस्टेंट फॉर्मेट रे हमको शो करियो ड्यूरेबिलिटी the database should be durable enough to hold all its latest update even the system fails or restarts the when you are inserting a record when you are typing anything in the word at that timing the current goes up or your battery is down तो जहां भी वो currently operation करती if I am not save the file in the hard disk then it is actually present in the RAM then when the current is not present then your data is lost but in the database if you do any kind of transaction it go for the permanent changes okay it go for the permanent changes so if the fails modified if the transaction commit but the system fails before the data could be returned to the disk then the data will be updated once the system spring back into the action okay जेतबे मु कोनोसी प्रकार ट्रांजैक्शन करूची आ से समय करंट पळेला मु अधा लेखिची बा अधा इनसर्टिंग रे रहिची अगेन जेतबे डाटा पुनी ऑन हबो अगेन जो ऑपरेशन हम छाड़ी थीबी से ऑपरेशन टा कंप्लीट हे कमिटेड है okay so that is called as the durability so anything any misfortune is happen like database may be corrupted or going to corrupt in between if you do any kind of transaction it will update over there isolation in a database system where more than one transaction are being executed simultaneously and in parallel the property of isolation state that all the transaction will be carried out and executed as if it is the only transaction in the system no transaction will affected the existing or any other transaction isolation means at the timing when I read the records if same time if another person trying to get the money from my account then it is showing me the updated record it is not like that when I check the account details at that timing any person want to withdraw the amount so that person cannot do so in both the sector everything is happened okay so it is not restrict to read or it is not restrict to the write ମୁଁ ତ ରିଡ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବି ମୁଁ ଧର ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସେ ସମୟରେ ରିଡ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଏଇ ରିଡ୍ ଟା କେମିତି ଫର୍ମାଟରେ ହବା ଦରକାର ନା ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଅ ଅପଡେଟେଡ୍ ଫର୍ମାଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ ଶୋଇଂ ୟୁ ଦ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଫର୍ମାଟ ओके तो से बिहेवियर भी शो कला कंसिस्टेंसी फॉर्मेट रे से रहियो ड्यूरेबिलिटी माने से चेक करिवो जदि कोनोसी प्रकार रो मिस हैपनिंग हैला ताले से अगेन मो जो ट्रांजैक्शन ता अधारु रहि जेतला से ताको कंप्लीट करके अपडेटेड रिकॉर्ड ता मते शो करिवो बुझला एसिड प्रॉपर्टी ओके इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन राइट discuss about the transaction but now you can also control the transaction आम जो इनसर्ट अपडेट डिलीट करवा डायरेक्टली ट्रांजैक्शन हुए ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने एसक्यूएल कमांड रे आम स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड ये लिखा पड़ो तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट आर द एसक्यूएल कमांड दैट मैनेज द चेंजेस मेड बाय द डीएमएल स्टेटमेंट आम जो डीएमएल स्टेटमेंट करवा ताको मैनेज करने आम ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट आम यूज करवा so grouping them into the logical unit called the transaction there are three primary statements are present there are three primary statement are commit which save the changes permanently commit टा जदि हमें यूज करिवा ताले कोन करिवो हमें जहां भी ट्रांजैक्शन करूचे ताको परमानेंटली चेंजेस करिवो आउ ताको हमें अगेन अनडू सिचुएशन को आसी परिबा नै बिफोर कमिट जदि हमें रोल बैक करूचे कमिट करिया पूर्व जदि हमें रोल बैक करूचे जहां भी चेंजेस हमें करिचे अगेन हमें ता पूर्व पोजीशन को जदि हमें आसीबा को चाहूचे तो से समय हमें रोल बैक यूज करिवा but ensure that it is done before commit which undo the changes next is what very important and interesting factor that is a save point is what suppose you do the transaction multiple times you do the transaction but you are in the changes you have to define a marker or a point okay point 1 point 2 so in point 1 suppose you have done the three transaction the save point 1 रे मु तीनटा transaction कली सेव पॉइंट 2 रे मु दीटा ट्रांजैक्शन कली सेव पॉइंट 3 रे मु तीनटा ट्रांजैक्शन कली सपोज मते सेव पॉइंट 2 को आसीबार अछि ओके मु जदि सेव पॉइंट 2 जाय मु रोल बैक करूची
ताले से पॉइंट 2 पर्यंत मु जहा जहा ट्रांजैक्शन करथेबी सब अगेन मु पाइजी। सपोज मो पाखे 7टा रेकर्ड अछि, 9 रेकर्ड अछि, मु प्रथम से पॉइंट रे 3टा रेकर्ड 1 2 3 को डिलीट कली, सेकेंड रे 4 5 6 को डिलीट कली। तो मुझे तब लिखिबी रोल बैक टू सेव पॉइंट 2 बा 2 नंबर मार्कर को जतले मु आसुची ताले मु फास्ट 3टा रेकर्ड पाइबिनी, मु पाइबी कोन 4 5 6 7 8 9। बुझिले कि नहीं? मोर 9टा रेकर्ड अछि, 9टा रेकर्ड को मु 3टा पार्ट रे डिवाइड करूची, सेव पॉइंट 1 सेव पॉइंट 2 सेव पॉइंट 3। सेव पॉइंट 1 ने मु प्रथम 3टा रेकर्ड को डिलीट कली, सेव पॉइंट 2 रे नेक्स्ट 3टा माने 4 रो 6, सेव पॉइंट 3 रे 6 रो 9 माने मो पाखरे एबे किछि रेकर्ड नाही, टोटल डाटा को मु डिलीट कर देली। एबे मते रोल बैक करिवार अछि, को पॉइंट को रोल बैक करिवार अछि, मते सेव पॉइंट 2 को रोल बैक करिवार अछि। जेतले मु सेव पॉइंट 2 को रोल बैक मारिबी ताले मु को रेकर्ड पाइबी 4 5 6 7 8। तो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को जदि अगेन मते फेरिवार अछि ताले मु डिफाइन करिवि सेव पॉइंट, ता द्वारा हमें ट्रांजैक्शन करि परिबे। बेले बेले कौन हुए आमे जतले सिस्टम रे गोटे गोटे समय किसी प्रकार नुआ कॉन्फ़िगरेशन बा अपडेशन आसी जाए जहाँ द्वारा मोर जो एक्जिस्टिंग फाइल थाए बा एक्जिस्टिंग कौन सी इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर थाए से आसेनी कि एक्जिस्टिंग फाइल टा डिलीट होगी पड़ी तो मु पाइबी केमती से फाइल टा। तो से क्षेत्र में कौन करा जाए ना यदि कंप्यूटर रे अपडेशन आसे तबे गोटे कंट्रोल पॉइंट टा डिफाइन करा जाए। कंप्यूटर रे जहाँ भी चेंजेस हबो, लैपटॉप रे जहाँ भी चेंजेस हबो, से गोटे पॉइंट डिफाइन करे, से पॉइंट टा को अगेन आमे जब फेरी जीवा से डेट को माने फ्लैशबैक को पळेवा अगेन से डाटा पाइबा माने टाइमर मशीन मु अगेन मोर जो पास्ट अछि पास्ट को पळेबो। तो कंप्यूटर भी से बळे जतरे कौन सी मेजर चेंजेस होची से गोटे सेव पॉइंट डिफाइन करे। तो मु जो डेट रे किसी चेंजेस होता है से डेटा को से मेंशन करी रखी थाए, मु से डेट को जतले फेरी जीवी मो डाटा टा पाइजी। तो ये भले हम डाटा टा भी आमे गेन करि पारो जदि कौन से प्रकार अपडेशन द्वारा बा सिस्टम परफॉर्मेंस जगो जदि किसी प्रकार चेंजेस हेई थाए आमे अगेन से डाटा गुडा को भी पाई परिबा जदि आमे सेव पॉइंट यूज करछे। तो एटा होची तीनटा मेन पार्ट सेव पॉइंट रो। देखिन ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट ओके।